वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया नेपाल बाउंड्री इशू। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट पर कुछ बयान दिए हैं और उससे पॉलिटिकल डिबेट वहाँ पर ट्रिगर हुआ है और एक अटेंशन गया है अनरिजॉल्व बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल पर। तो इंडिया और नेपाल जो है एक 1850 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम तक जाता है। मोस्ट ऑफ द बाउंड्री इशू जो है वो डिमार्केटेड है और कुछ सेगमेंट्स जो है वही सिर्फ डिस्प्यूटेड है। जो डिस्प्यूट है वो ट्रीटी ऑफ सगौली से आता है 1816 में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद साइन हुई थी। ये ट्रीटी कहती है कि जो काली रिवर है, महाकाली रिवर है, वो वेस्टर्न बाउंड्री है नेपाल की, लेकिन ये सोर्स कहाँ है इस रिवर का, उससे रिलेटेड जो है वो डिसएग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में आते रहते हैं। अब मेजर डिस्प्यूटेड एरियाज अगर हम देखें तो है तो काला पानी जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन पर, और इंडिया इस रीजन को एडमिनिस्टर करता है। दूसरा है लिपू लेक पास जो कि एक माउंटेन पास है, कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत के साथ, और ये एक इंपॉर्टेंट राउट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। इसको भी नेपाल क्लेम करता है एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। फिर है लिम्पी यादुरा। लिम्पी यादुरा जो है नेपाल कहता है कि काली रिवर ओरिजिनेट यहीं से होती है, और काला पानी और लिपू लेक अगर ऐसा मान लें हम, तो काला पानी और लिपू लेक जो है वो नेपाली टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। इंडिया इस इंटरप्रिटेशन को डिस्प्यूटेड मानता है, ठीक है। तो 2020 में जो है नेपाल ने एक न्यू पॉलिटिकल मैप इनकॉर्पोरेट किया जिसमें काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी यादुरा अपनी टेरिटरी में दिखाया। इंडिया ने इस मूव को रिजेक्ट कर दिया। अब ओकेजनल टेंशन्स के बावजूद दोनों कंट्रीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली अपनी कमिटमेंट दिखाती रहती हैं कि हम जो नेगोशिएशंस के थ्रू ही इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बॉर्डर इशू जो है वो सिर्फ एक साइडेड का नहीं है, मतलब नेपाल भी ऐसे कुछ एरियाज़ को कंट्रोल कर रहा है जो नेपाली टेरिटरी के नाम पर, जिसको इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ जो हमको ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करने चाहिए फैक्ट्स को, और रिजॉल्व कर लेना चाहिए मैटर्स को एज फ्रेंडली नेबर्स। तो जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि नेपाल ने एक डिप्लोमेटिक नोट भी भेजा इंडिया को कि काठमांडू जिन टेरिटरीज़ को डिस्प्यूटेड मानता है इंक्लूडिंग लिपू लेक, इंडिया ने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। कहा कि फ्यूचर जो डिस्कशंस हैं वो हम उसमें हिस्टोरियंस, सर्वेयर्स और बाउंड्री एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे, और ऑब्जेक्टिव ये रहेगा ताकि एक फैक्चुअल क्लैरिटी आए। नेपाल ने ये भी बोला, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम बाउंड्री इशू को सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि चाइना और यूके के साथ भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि यूके का इसके साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन है, लेकिन इंडिया ने ट्रेडिशनली जो है वो कहा कि ये बायलैटरल बाउंड्री इशू है और इसको हम सिर्फ इंडिया और नेपाल ही सिर्फ जो है वो रिजॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसमें। तो जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जब ये बोला कि नेपाल भी जो है कुछ इंडिया के द्वारा क्लेम की गई टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, उससे नेपाल में डिबेट शुरू हो गई। वहाँ के कोई डिप्लोमेट्स और बाउंड्री एक्सपर्ट्स ने इस क्लेम को क्वेश्चन किया, और उनके हिसाब से कोई ऑफिशियल एविडेंस ऐसा नहीं है कि नेपाल ने इंडियन टेरिटरी को एनक्रोच किया हुआ है। उस जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नोट किया कि 97% जो इंडिया नेपाल का बाउंड्री इशू है वो ऑलरेडी रिजॉल्व है। एक्सपर्ट्स ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इंस्टेंसेस हैं फार्मर्स जो है कल्टिवेट कर रहे हैं लैंड को दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे, क्योंकि जो बाउंड्री पिलर्स हैं वो मिसिंग हैं। तो नेपाल ने भी रिसेंटली क्या किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो लिपू लेक पास से हमने रिज्यूम की थी, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। इंडिया ने इन ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया और कहा कि नेपाल की पोजीशन जो है वो यूनिलैटरल एक्सपेंशन है टेरिटोरियल क्लेम्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया की जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो गुड रिजल्ट दिखा रही है। तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो इंडिया के एम्बिशन को, जो कि हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर और जो है फैब कैपेसिटी हम अपनी बढ़ाएं, उसके लिए जो है बनाया गया है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज जो है एलिजिबल हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। नोडल एजेंसी है सीडैक। अब इसमें होता क्या है कि जो PDLI स्कीम है उसमें रीइंबर्समेंट होती है 50% ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर तक की, मैक्सिमम जो है कैप लगा है 15 करोड़ पर एप्लीकेशन। फिर जो डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है उसमें 6 से 4% का नेट सेल्स टर्नओवर का जो इंसेंटिव मिलता है 5 साल के लिए, और इंसेंटिव पे कैप लगा है 30 करोड़ पर एप्लीकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल है वो गवर्नमेंट पॉलिसी से का क्लेम लेने के लिए इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन
किसी प्रॉमिस के ऊपर जो है रिलाय करके उस पर एक्ट कर देता है और बाद में वो पर्सन जिसने उसको प्रॉमिस किया था उस पर बैक ट्रैक कर लेता है, तो जो है वो आप कोर्ट में जाकर उस प्रॉमिस को इन्फोर्स करा सकते हो, और अगर आपको उससे कुछ हार्म हुआ है तो आप उसको हार्म को की भरपाई भी ले सकते हो। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल बेसिकली प्रिवेंट करता है कि जिसने प्रॉमिस किया है वो एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉमिस करे भी, ठीक है। तो प्रॉमिस ही जो है उसने अगर रिलाई किया है उस प्रॉमिस पर, मतलब कि अब एग्जांपल समझो कि एक वेंडर ने कहा आपको कि आप गुड्स परचेज़ कर लो, अगर आपको सही नहीं लगे तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है, या फिर उसको रिप्लेस कर दूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उस प्रॉमिस के बेसिस पर, ओरल प्रॉमिस था ये, उस प्रॉमिस के बेसिस पर कस्टमर ने उस क्लोथ को परचेज़ कर लिया और घर ले गया, ठीक है। लेकिन कस्टमर जब वापस आया रिटर्न करने के लिए तो वेंडर ने कहा कि वो तो मैंने आपको ओरल प्रॉमिस किया था, लेकिन वेंडर जो है उसको फिर अब स्टॉप किया जा सकता है कि वो अब क्लोथ्स को रिटर्न करे क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। तो डॉक्ट्रिन जो है वो एक प्रॉमिसी के राइट्स को या एग्रीव्ड पार्टी के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब ये डॉक्ट्रिन कई कंट्री में वेरी करती है। अब इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया है इसमें कि एक क्लियर और अनएम्बिगुअस प्रॉमिस होना चाहिए, एक क्लियर और एक अनएम्बिगुअस प्रॉमिस होना चाहिए, और प्लेंटिफ जो है उसने उस प्रॉमिस के बेसिस पर ही रीजनेबली एक्ट किया होना चाहिए, और बाद में उस प्लेंटिफ को अगर उससे लॉस हुआ है तभी जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल जो है वो इन्वोक होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने एक एक्सोप्लैनेट के वेदर को कैप्चर किया है जो कि लगभग 700 लाइट ईयर्स अवे है हमारे से। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च किया था। मोस्ट पावरफुल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो नासा, ईएसए और सीएसए के बीच में मिलकर बना है। ये ऑर्बिट कर रहा है L2 लग्रांज पॉइंट जो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स बियॉन्ड अर्थ है। ये ऑपरेट करता है प्राइमरीली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि गैलेक्सीज जो कि बिग बैंग के बाद बनी उनको देखना, ऑब्जर्व करना, डिटरमिन करना एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, एग्जामिन करना स्टेजेस ऑफ स्टार क्रिएशन और इन्वेस्ट करना पोटेंशियल फॉर लाइफ इन प्लानिटरी सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अहिल्याबाई होलकर जी। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है वो ट्रिब्यूट्स पे किए हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ये जो है रूलर थी मालवा टेरिटरी की 1767 से 1795 के बीच में। इनको पुण्य श्लोक भी कहते हैं, मतलब वन एज प्योर एज सीक्रेट चांट्स। जॉन की जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने इनको टाइटल दिया फिलोसफर क्वीन का। अब अगर इनके हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को रीबिल्ड किया है, खासकर काशी विश्वनाथ टेम्पल को। इन्होंने कई स्टॉलवर्ड्स को पैटर्नाइज किया, जैसे मराठी पोइट्स मोरोपंत, शाहीर अनंत गांधी, संस्कृत स्कॉलर्स खुशहाली राम। इन्होंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बनाई महेश्वर में। इनको जो है वो क्रेडिट किया जाता है, इन्होंने कई जो है गुरुकुल और स्कूल्स भी बनाए। इवन इन्होंने विमेन की आर्मी भी बनाई और ट्रेन किया उन्हें वॉरफेयर, सेल्फ डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्यूफोर्ट क्लास कासल। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल जो है अपने आप को डीपर जो है वो पुश करके लेबनान में एंटर करा है और उसने हिस्टोरिक ब्यूफोर्ट कैसल को कैप्चर कर लिया है। तो ब्यूफोर्ट कासल को वहाँ पर कलाते शकीफ कहते हैं, कलाता अल शकीफ कहते हैं। एक मीडिवल फोर्ट्रेस है ये, जो एक कमांडिंग हिल पर है सदर्न लेबनान के। इसको क्रूसेडर्स ने 12th सेंचुरी में बनाया था। एक डिफेंसिव रोल था इसका मिडल एजेस में, और ये कासल जो है वो फाइटिंग में पहले भी एक तरह से शामिल रहा है। 1982 में भी लेबनान वॉर के टाइम पर इसराइल ने इसे कैप्चर कर लिया था PLO से, और इसको साल 2000 तक कैप्चर रखा था जब वो बाद में वहाँ से विड्रॉ हुआ था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैथुर डैम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैथुर डैम जो है वो ओपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम रह गई है, बिकॉज पुअर स्टोरेज है वहाँ पर, और पुअर साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जा रहा है इस बार। तो मैथुर डैम मैथुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मैथुर सालेम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तमिलनाडु के। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स है इंडिया का, लार्जेस्ट है तमिलनाडु का। इसको एक गॉर्ज में बनाया गया है जहाँ पर कावेरी रिवर जो है वो प्लेन्स में एंटर होती है। 1934 में इसको बनाया गया था और 9 साल लगे थे उस टाइम पर बनाने में। तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैप्चरिंग कावेरी वाटर्स, इरीगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Nepal boundary issue. This topic is important for international relations. So recent remarks have been made by Nepalese Prime Minister on the India-Nepal boundary dispute, and it has triggered
political debate, and renewed attention on the unresolved border issues between the two sides. So, India and Nepal both share an open international border of nearly 1850 kilometers, which span across Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim. While most of the boundary has been demarcated, a few segments remain disputed. Roots of the dispute lie in the Treaty of Sagali, which was signed in 1816 between East India Company and Nepal after the Anglo-Nepalese War. The treaty identified Mahakali River as the western boundary of Nepal, but disagreements emerged regarding the exact source of that river. Okay, so the major disputed areas include Kalapani, Lipulek Pass, and Limpiadura. So Kalapani is a strategically important area located near the India-Nepal-China tri-junction. India administers this region, but Nepal claims it as part of its Darchula district. Lipulek Pass similarly is a mountain pass connecting India with Tibet, and it serves as an important route for Kailash Mansarovar Yatra and border trade with China, but Nepal claims it as part of its own territory. Similarly, Nepal argues that Kali River or the Mahakali River, it originates from Limpiadura, and if this claim is accepted, then this would place Kalapani and Lipulek within Nepalese territory. But India disputes this interpretation. Okay, so in 2020, what happened is that Nepal issued a new political map incorporating Kalapani, Lipulek, and Limpiadura within its territory. India rejected this move, saying that it is a unilateral action inconsistent with historical facts and existing understandings. So, despite occasional tensions, both countries have consistently reiterated their commitment to resolve the issue through negotiations. So, Nepalese Prime Minister recently stated in the parliament that he was surprised to learn that the border issue may not be entirely one-sided. According to him, Nepal has long maintained that India has encroached upon Nepalese territory, but there are also locations where Nepal occupies land which is claimed by India. He stated that both countries should objectively examine the facts and resolve the matters as friendly neighbors. Nepal had formally sent a diplomatic note to India regarding territories which Nepal considers disputed, including Lipulek. India responded positively. He stated that future discussions would involve teams comprising of historians, surveyors, and boundary experts. The objective would be to establish factual clarity. Okay. A notable aspect of his remarks was the statement that Nepal has also discussed the boundary issue not just with India but also with China and UK. He said that UK has a historical connection to this issue, but India has traditionally maintained that all bilateral boundary issues should be resolved directly between India and Nepal without any third-party involvement. So, the Nepalese Prime Minister's assertion that Nepal may also be occupying territory claimed by India generated significant political debate within Nepal when several diplomats and boundary experts questioned this claim. As per them, there is no official evidence suggesting Nepal has encroached upon any Indian territory. The Prime Minister of Nepal said that 97% of India-Nepal boundary issues have been resolved, and experts also clarified that some instances are there where farmers are cultivating land across the border because of the damaged or missing boundary pillars, and this should not be interpreted as state-sponsored territorial encroachment. Okay, so Nepal has been objecting towards the resumption of Kailash Mansarovar Yatra through Lipulek Pass, arguing that this area falls within its territory. India rejected this objection, describing Nepal's position as a unilateral expansion of territorial claims. Okay. So the next topic is design linked incentive scheme. This topic is important for economy section. Recently, the Union Minister has said that India's design linked incentive scheme is showing good results. So this scheme is a key instrument in advancing India's ambition to develop a strong fabless capability. So the scheme aims to reduce import dependence, strengthen supply chain resilience, and enhance domestic value addition. Startups and MSMEs are eligible for the financial incentives and design infrastructure support for semiconductor product design and deployment. This scheme is being implemented through Ministry of Electronics and Semicon India under Semicon India program. CDAC is the nodal agency. So the financial incentives are as follows. In the product design linked incentive, reimbursement of up to 50% of eligible expenditure is given, and the cap is at 15 crore rupees per application. Then we have the incentives of 6% to 4% of net sales turnover for next 5 years in deployment linked incentive scheme, and the incentive is capped at 30 crore rupees per application. So the next topic is doctrine of promissory estoppel. This topic is important for our polity section. Supreme Court recently observed that doctrine of promissory estoppel cannot be invoked to claim a benefit under a government policy which was never aimed to benefit a specific class of industrial unit. So it's a legal doctrine which states that if someone reasonably relies on a promise and acts in a way which causes them to some harm because of that promise, then the promise can be enforced. Okay, so promissory estoppel prevents the promisor from arguing against the enforcement of a promise. So
let's understand it through an example. Let's suppose that you go to a vendor, and that vendor makes an oral promise to you that just purchase this good, and if they do not fit your needs, then I will return them. So you make that purchase and you take them home, but after you come to return the product, the vendor says that I only made only made an oral promise. So vendor will now be stopped from refusing the clothes return because he had made that promise. Okay, so promisee must have relied on that promise and suffered a loss because of the non-performance of that promise. Doctrine also prevents the promiser or the enterprise from going back on its words or promise, and doctrine also seeks to protect the rights of the aggrieved party. Okay, so this doctrine varies from country to country, and in India in 1981, in Chhaganlal Keshavlal Mehta versus Patel Narandas Haribhai case, Supreme Court listed has given a checklist for when this doctrine can be applied. First, there must be a clear and unambiguous promise. Secondly, the plaintiff must have acted on that promise reasonably, and the plaintiff must have suffered a loss also. Okay, only then the promise this doctrine can be invoked. So the next topic is James Webb Space Telescope. This topic is important for your science and tech section. So NASA's James Webb Space Telescope has captured weather of exoplanet, which is nearly 700 light years away from Earth. So this space telescope was launched in December 2021. It is the most powerful space observatory built through collaboration between NASA, ESA, and CSA. It orbits the L2 Lagrange point, which is about 1.5 million kilometers beyond Earth. It operates primarily in the infrared spectrum. It is aimed to look for galaxies which were formed just after the Big Bang. It will determine the evolution of galaxies from their creation to the present. It will also examine the stages of star creation till the formation of planetary systems, and it will also investigate the potential for life in any planetary system. So the next topic is Ahilyabai Holkar. This topic is important for your art and culture section. Recently, Prime Minister of India has paid tributes to Lokmata Ahilyabai Holkar on her birth anniversary. So she was a ruler of Malwa territory from 1767 to 1795. She is known as Punya Shlok. One is meaning one who is as pure as the sacred chants. John Key, the British historian, gave her the title of Philosopher Queen. So her contributions include rebuilding of major temples, including the Kashi Vishwanath temple in 1780. She patronized stalwarts like Marathi poet Moropant, Shahir Anant Gandhi, Sanskrit scholar Khushali Ram. She also established a textile industry in Maheshwar. She established many gurukuls and schools, and she also formed a women's army. Okay. So the next topic is Beaufort Castle. This topic is again important for your art and culture section and also international relations. So Israel has pushed itself deeper into Lebanon recently and captured the historic Beaufort Castle. So this castle is locally known as Kalat al-Shakif, and it's a medieval fortress situated atop a commanding hill in southern Lebanon. It was originally built by the Crusaders in 12th century, and it has demonstrated its defensive role in the Middle Ages. This castle has also been a part of the fighting in past. In 1982, Israel captured this Beaufort Castle from the PLO and held it until it withdrew from Lebanon in the year 2000. So the next topic is Methur Dam. This topic is important for our economy section. The probability of Methur Dam getting reopened on the scheduled date appears to be remote because of the poor storage and forecast of a poor southwest monsoon this year. So Methur Dam is located at Methur, Salem district of Tamil Nadu. It is one of the largest dams of India, and it is the largest in Tamil Nadu. It is constructed in a gorge where the Kaveri river enters the plains. It was built in 1934 and it took 9 years to complete, and this entire work was supervised by the then governor of Madras. So it was constructed for the main purpose of capturing Kaveri rivers for irrigation, drinking water and power generation. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.